हेलो, वी आर स्टडिंग सिग्नल्स एंड सिस्टम और आज का हमारा टॉपिक है फूरियर सीरीज। दी फूरियर सीरीज, फूरियर ट्रांसफॉर्म, ओके, ये ऐसे मैथमेटिकल टूल्स है which are very much important in signals and system, we can say signal processing। तो फूरियर सीरीज और फूरियर ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन डिफरेंट फंक्शंस पे है। तो बिफोर राइटिंग इक्वेशन ऑफ फूरियर सीरीज डायरेक्टली हम थोड़ा जनरल डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग सिस्टम सिग्नल्स। सिग्नल्स जनरली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है पीरियोडिक सिग्नल, पीरियोडिक सिग्नल, या फिर we can call it as a function. In pure mathematics it is called function, and another type is non-periodic. When we hear word Fourier, Fourier series applicable to both types of functions, both types of signals. Fourier series is particularly applicable for this periodic signal. Okay, we'll highlight here. So here analysis is done, analysis using Fourier series, or non-periodic signals का particularly using Fourier transform, Fourier transform for non-periodic signal, which we'll discuss later about Fourier transform. It is for Fourier's, it is Fourier series is for periodic signals. What is periodic signal? A signal x of t is said to be periodic if it repeats itself after certain amount of time. I mean x of t plus t is equal to x of t. ओके, मतलब यहाँ पर t जो है, t is a real positive number, real positive number. For example, if you draw a waveform like this, let us take square waveform. So this waveform, one positive half cycle and other positive half cycle, it makes one cycle. So this one is the period of this, and this is x of t. Okay, x of t. So this signal, this x of t repeat itself in time t. Suppose t equal to 2 seconds है, so this will be x of t plus 2 seconds is equal to what? X of t. What is x of t? ये हमारा x of t है, this one, this portion is x of t. Okay, it is repeating itself. So this is the periodic function or periodic signal जिसे हम Fourier series अप्लाई करेंगे। अभी Fourier series के बारे में जब हम बात करते हैं तो what is the use of studying Fourier series? Okay, applications of Fourier series. हम Fourier series का इक्वेशन लिखने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि why we are studying Fourier series. तो Fourier series is particularly applicable for the analysis of signals. Okay, जब कोई इंजन है, कोई मैकेनिकल कटिंग मशीन है, सपोज anything kind of a very big thing which is operational depend upon the type of a engine in it.
and when we start it, vibrations are generated. Okay, so what is the reason for generating vibrations? हमें कब पता चलेगा? When we record the vibration and when we study it, when we analyze it, कौन सी frequency dominant है उसमें, okay, and how it is gradually increasing or decreasing, है ना? So we can record it, we can analyze it by using Fourier series. जब हम analysis करेंगे तो हम उसका resource जब हमें पता चलेगा, we can redesign the engine and we can reduce the noise and we can make the system smooth. If you come to electronics and communication or signal processing applications, so we have number of signals. तो उसमें जब noise mix होता है तो उसमें से हम noise components को filter out कर सकते हैं. If you know the frequency domain of that signal, okay, so we have time domain x of t and we have x of f or x of omega is the frequency domain. So Fourier series study करने के बाद हमें क्या मिलेगा? x of t जो सिग्नल है will be converted to frequency domain. Frequency domain. A periodic x of t signal will be converted to frequency domain. So in frequency domain we'll get two types of graphs, or it is called as a magnitude spectrum. We'll get magnitude spectrum after studying Fourier series, and other is phase spectrum. Magnitude spectrum and phase spectrum. Okay, this is together called frequency spectrum. Fourier series provide us frequency spectrum. Okay, we can know, we'll be able to know what are the components at what frequency, what is the magnitude of that harmonic, and different things can be done using the frequency domain. So let us begin Fourier series. So Mr. Fourier said that any periodic function or signal, any periodic function or signal can be represented as a sum of so it should be infinite sum of, as infinite sum of sines and cosines. ओके, इस स्टेटमेंट को जब हम केयरफुली रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एनी पीरियोडिक फंक्शन, ओके, एनी पीरियोडिक फंक्शन, एनी पीरियोडिक सिग्नल, फॉर एग्जांपल स्क्वायर वेव फॉर्म, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, सॉटूथ वेव फॉर्म, कुछ भी, कोई भी वेव फॉर्म को हम इन्फिनिट सम ऑफ साइंस एंड कोसाइंस के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, इसलिए वन साइड जो है इसका वो है x of t which is our time domain signal. Fine. Right side also it's a time domain, but it is a0 plus sum of n is equal to 1 to infinity an cos of n omega t plus bn sin of n omega t. ओके, ये हमारा फूरियर सीरीज इक्वेशन है. यहाँ पर a0 है या a0/2 है, ये हम आगे देखेंगे. ओके, हियर a0 an and bn are constants, and are called Fourier coefficients. a0 an and bn are Fourier coefficients. Okay,
that need to be calculated. Okay. Now see, when we write this equation, before that you should know this makes a set of orthogonal signals. मतलब cos and sin जो इस representation में present है, this side is a function, x of t is approximated using this notation. Okay, what is meant by approximated? Suppose we have a square waveform. This waveform is x of t. So x of t जो कि स्क्वायर है, it can be represented using x of t is equal to Fourier series representation. That is the meaning of right side equation, Fourier series representation. Okay, when it is possible, when Fourier series of given function converges, ये जब कन्वर्जेंस हो सकती है तभी x of t क्या होगा, अप्रोक्सीमेट होगा, अप्रोक्सीमेटली. ओके, दिस रिप्रेजेंटेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन जो है, सो इट विल बी अप्रोक्सीमेट टू x of t. ओके, so this is time domain trigonometric, and then we can obtain using exponential Fourier series in frequency domain. Okay, we'll see it later, but this is the concept that square waveform is represented using the Fourier series representation, infinite sum of sines and cosines. Okay, so हमारा Fourier series में अगर हम what is orthogonal signal, orthogonal signals. Okay, orthogonal signal जो है, when two functions are there and their integration, internal integration जो है, internal product जो है g of f of x of t g of t over the period, अगर इनका इंटीग्रेशन जो है 0 है, इट मीन्स x of t and g of t are orthogonal. they are perpendicular to each other. बिल्कुल वैसे ही हमारे पास जो साइन एंड कोसाइन है, ओके, साइन एंड कोसाइन जो है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज में इक्वेशन में, दोज आर ऑर्थोगोनल सिग्नल्स. ओके, so let us write the equation for a0. so x of t is equal to a0 plus sum of n equal to 1 to infinity. Okay, so we'll take in the center. It is an cos of n omega t plus bn sin of n omega t. We'll write t outside. n omega represents some frequency component. Okay, अभी पहले इसको समझेंगे. अगर n का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, n इज इक्वल टू कुछ वैल्यूज रखेंगे. ओके, फॉर n इक्वल टू है ना 0 1 2 एंड 3, ये इक्वेशन है ना इलेबोरेट हो जाएगा, समेशन निकल जाएगा. तो विल गेट समथिंग x of t. आई एम गोइंग टू राइट. Okay, without writing a0, we are writing this a0 cos of 0. Okay, t n का वैल्यू 0 है प्लस, ओके, n इज इक्वल टू 1 ले लो, यह a1 cos of 1 omega t प्लस b2 cos of 2 omega t प्लस हमें b3 तक पुट करना है, a3 तक, so it is a3 cos of 3 omega t प्लस प्लस सो ऑन, प्लस इसका जो लास्ट वैल्यू होगा फॉर n, so it is an cos of n omega t. Similarly, okay, bn और साइन n ओमेगा में अगर हम n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड n अप टू n पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a0 साइन ऑफ 0 t. ओके, n ओमेगा, n इज 0, so साइन 0 t प्लस, it's not a0, it's b0, so it is b1 साइन ऑफ 1 ओमेगा t
plus b2 sin of 2 omega t plus so on plus bn sin of n omega t. ओके, व्हाट इज दिस? ये जो है दिस पोर्शन जो है दिस वन, दिस इज इक्वल टू 1, सो इट विल बिकम a0. ओके, मतलब a0 के साथ कोई भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अटैच नहीं है. ओके, देयर इज नो कॉस एंड साइन. इट मीन्स दैट इट इज द डीसी वैल्यू प्रेजेंट इन द फंक्शन. जो हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं फूरियर सीरीज से, उसका डीसी एवरेज वैल्यू कितना है? इट इज शोन बाय, इट इज गिवन बाय a0. ओके, और ये जो कंपोनेंट है ये कंप्लीटली इट विल गेट 0. साइन 0 इज 0, साइन 0t इज 0. ओके, सो ये जो है व्हाट दिस रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स दी दिस a1 a2, सॉरी इट्स a2 नॉट b2, a2 a3. दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ हार्मोनिक. और ये जो है 2 ओमेगा, ओमेगा, 3 ओमेगा, these are the multiples of fundamental frequency. What is the fundamental frequency? Okay, suppose if you take sin t, कोई फंक्शन है उसके अंदर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ओके, ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी. हमें पीरियड पता है कोई भी फंक्शन का, तो हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं. सो ओमेगा इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. सो व्हाट इज 2 ओमेगा? सो इट्स 1 ओमेगा, 2 omega, 3 omega, 4 omega up to n omega. What are these things? These are, okay, so this one is fundamental frequency. This one is fundamental frequency. And what is this? All these things are, these things represent the harmonics. हार्मोनिक्स का मीनिंग क्या है? हार्मोनिक्स मीन्स मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ओके, एंड दिस कंप्लीटली सेट, ये जो कंप्लीट सेट है एक स्क्वायर वेवफॉर्म है. स्क्वायर वेवफॉर्म जो कि हमारा x ऑफ t है. सो ये x ऑफ t, ये x ऑफ t हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं डिफरेंट साइंस एंड कोसाइन फंक्शन से. अभी एक फ्रीक्वेंसी है, सपोज, जस्ट आई एम टेकिंग एग्जांपल. ओके, जस्ट टेकिंग एग्जांपल, नॉट राइटिंग एग्जैक्टली द कंप्लीट set of harmonics present. I will show you using the animation. So एक component है, so this is one more component, this is cosinusoidal component. One more component we can take this as, so it will start somewhere. Okay, every component has a different phase and different amplitude. See this. So this square waveform which is x of t, ये हमारा x of t है, and right side is the Fourier series which is the finite sum of sines and cosines having value of a0. इसका जो average value है वो a0 है. So a0 is nothing but DC value present in x of t, DC value present in x of t. Okay, remaining things are harmonics. A1 cos omega, A2 cos 2 omega, A3 cos 3 omega, B1 sin omega, B2 sin 2 omega, and so on. Okay, so this is the trigonometric Fourier series approximation using Fourier series of x of t. And when we have a0, x of t is equal to a0 plus sum of an cos of n omega t plus bn sin n omega t. ये हमारा इक्वेशन है. लेट अस टॉक अबाउट दी
Fourier series coefficient formulae. So when we multiply this function using, okay, multiply both sides, okay, or directly we will find first a0. If you integrate this, if you integrate both sides, integrate both sides over minus pi to pi, okay, means the time period t is 2 pi. So we will get minus pi to pi integration of x of t dt is equal to a0 integration of what we have here, nothing, so it is dt, okay, a0 is constant, plus summation n is equal to 1 to infinity an integration or minus pi to pi cos of n omega t dt plus again integration, okay, bn outside, so it is minus pi to pi sin n ओमेगा टी dt. अब ये जो पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन का साइन एंड कोसाइन का, सो दिस पोर्शन व्हेन यू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म यू विल गेट 0. सो दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0. ओके, व्हाट इज रिमेनिंग? दिस पोर्शन इज रिमेनिंग ओनली. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस? इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है हमें. इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt इज t, so over minus pi to pi, so this side is minus pi to pi integration of x of t dt is equal to, it is a0 into integration of 1 is t and it is minus pi to pi. So it is a0 into pi, so it is a0 into 2 pi. So what we'll get? We'll get a0 is equal to, so it is 1 upon 2 pi integration or minus pi to pi x of t dt. तो ये है हमारा इक्वेशन फॉर a0. ओके, a0 इज द dc वैल्यू प्रेजेंट इन द गिवन फंक्शन x of t, और ऐसे हम a0 फाइंड कर सकते हैं. अभी दिक्कत क्या है? इन सम बुक्स इट इज गिवन लाइक दिस. ओके, हियर इट इज गिवन डिवाइड बाय 2. कुछ बुक्स में डिवाइड बाय 2 है. a0 by 2 is given. So what to do in this case? Which one is correct? This one is correct और सिर्फ a0 correct है. तो उसके लिए we have this formula. Okay, if a0 is given, only a0 अगर present है, so take it is 1 by t time period 0 to t x of t dt. ये फार्मूले को यूज करना है हमें. अगर a0 by 2 इक्वेशन में हमने मेंशन किया है, ओके, तो हमें क्या करना है? इस फार्मूले में a0 इज इक्वल टू 2 ओवर t लेना है. 2 ओवर t लेने से क्या होगा? हमें सेम वैल्यू सेम रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर. ओके, so this is the one care you have to take while writing the trigonometric Fourier series equation. Okay, so this equation is called as a trigonometric Fourier series. Okay, so this one is trigonometric Fourier series. Why it is trigonometric Fourier series? Because you are using notations cos and sine, those are trigonometric notations. Okay, so the Fourier series representation, okay, is converted to exponential Fourier representation. Before that, we write equation for even and odd Fourier series. Okay, so even Fourier series or Fourier series for even function. Fourier series for even function. What is even function? So even function, okay, x of
even function. Okay, so before writing exponential Fourier series, we'll write Fourier series for even function and odd function. उससे पहले हम देखते हैं कि what is even function and odd function. Okay, so I'm going to write Fourier series for even function. Fourier series for even function. If you know this, it will save your time. So there is no need to find an and bn every time. फंक्शन को देखो, वेवफॉर्म को आइडेंटिफाई करो, वो किस टाइप का है, इवन है या ऑड है, अकॉर्डिंगली फूरियर सीरीज लिखो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म को एंड गेट द आंसर फॉर एन और बी एन, जो कुछ ऐसा हो. सो व्हेन एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी, अगर ऐसा है तो इट इज कॉल्ड इवन फंक्शन. ओके, तो what is x of t? x of t is this portion. ये जो पोर्शन है वो है x of t, मतलब राइट साइड है, एंड x of माइनस t जो है वो है लेफ्ट साइड, मतलब एम्पलीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है, x of t है ना, 0, सो इट इज पाई एंड इट इज माइनस पाई. सो माइनस पाई टू 0 और 0 टू पाई इसका टाइम पीरियड है, एंड दिस इज द इवन फंक्शन. ओके, और भी जो है cos, जो cos फंक्शन है, cos is also an even function. See this is the cos function. Okay, so इसका जो पार्ट है, so this part, okay, this is, ये क्या है, x of minus t, और इधर का जो पार्ट है वो है x of plus t है. Okay, both are similar, just it's a even function. So what is the Fourier series for even function? इवन फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज क्या है? ओके, so let us, okay, it is deleting, let it be, so write equation for that, Fourier series for even function. I will delete this also, or okay, so we know what is even function, and x of t is equal to a0 plus sum over n is equal to 1 to infinity an cos of n omega, we'll write in bracket n omega, so n omega t. ये हमारा Fourier series है when function is even. What happens when function is even? तो ये जो component है a0, ये 0 नहीं होगा. Okay, it will add, it will find the average of two sides. Okay, we'll get some value. Now when function is odd function, Fourier series for odd function, अभी before writing equation आपको ये समझना होगा what is mean by odd function. Okay, I will show you. अभी ये वेवफॉर्म है, ये वेवफॉर्म में जो पोर्शन है, ये देखिए, this portion and this portion. Okay, it is minus 2 and it is plus 2, x of t. Okay, so 1, it is minus 1. So what will be the average value of this? मतलब this is on one side and this is inverted, amplitude is inverted, so it is said that when x of t is equal to minus x of minus t, मतलब 2 है और ये क्या है, minus 2 है, वो भी लेफ्ट साइड में. So this is the function, this is the odd function, x of t is equal to minus x of minus t. Okay, so antisymmetric. And what is the average value of this? Average DC value of this a0, क्या रहेगा, ये सीरीज में इसके a0 will be 0 because opposite है, 2 minus 2 क्या आएगा, 0 आएगा. Okay, so this Fourier series जो है इसका, so I'll write here, like next Fourier series for odd function, there will not be a0,
A0 absent होगा इसमें, only sinusoidal components will be present. So x of t will be approximated to sum of for n equal to infinity, 1 equal to infinity, and it is bn sine of n omega t. Only sinusoidal components and bn will be present, means you have to find only bn. You need to find a0 and an, both are 0. Fine.